Okay, Aman. So you're going for JKPSC. Can you just start with the introduction? Yes, thank you, ma'am. My name is Aman Sharma. I belong to Rajouri district of Jammu and Kashmir Union Territory, which is also known as the Land of Kings. I have done my primary and secondary education from Jammu city, and then I have done my undergraduation in mechanical engineering from Chandigarh University. Apart from my academics, I have also participated in co-curricular activities like Tech Fest and Cultural Fest in my university. Talking about my hobbies, I like to watch and play cricket, and currently I am preparing for JKPSC mechanical exam. Thank you, ma'am. Okay. Aman, कौन सी year pass out है? Ma'am, 2020. 2020. Corona times. Corona Yes, से पहले. yes, ma'am. Corona times, right? So okay. So Aman, you're preparing since last 2-3 years. Yes, ma'am. There was a vacancy in our state, but there was delay in the exam because due to the corona. Okay. So JKPSC की हर time you're preparing for this only और भी sectors में prepare कर रहे हो? Ma'am, I dedicatedly prepared for my core stream mechanical. There was an exam of JEE junior engineer also, which I missed by nearly whisker, and second attempt this for this JKPSC exam. Okay. A में क्यों जाना चाहते हो? Ma'am, a assistant engineer is a very prestigious post in my J&K department, and it is the highest post in which I can work in my own state, and I can do work for the development of state by joining this post. How you think like you can do the development of your state by joining GAIL? Yes, ma'am. In a as by joining this post, I know the mechanical aspect core knowledge, but I want to implement that knowledge in the field. So by joining this post, I can do justice with my core knowledge what I have attained throughout these years, and certainly I will help in the developmental works that I can do with by joining this post. अमन अभी तक किया है कुछ अपने होमलैंड के लिए? I am preparing myself to do that on that level, so I can do uh, something for the state. I'm preparing myself only today till date. You are from Rajouri district, right? Land of Kings. Why is it called Land of Kings? From time to time, it had been ruled by various rulers, like like the Mughal rulers. The famous Chinggis fort in Rajouri was built by the Mughal ruler Jahangir, and Mhm. after that, it was ruled over by the Britishers. And in the 1846, it was taken by the Maharaja Ranjit Singh in the 1846 by Amritsar Treaty, and from then on it was ruled by the Dogra rulers till 1947. The last king was Maharaja Hari Singh at the So, time of 1947. Aman, you have done your graduation from CU, na? Yes. Chandigarh University. Yes, So, ma'am. वहाँ कैसे you thought of doing it from CU? There are many multiple other universities in your hometown also. There might be universities and all. So, it's also Ma'am, private. yes, ma'am. I don't know the exposure at that time. I don't know much of the universities. I have prepared for this JEE exam, JEE mains exam. I have qualified the exam, but I didn't get my mechanical post in NIT Srinagar. So I want to join mechanical engineering. So I prefer not to waste my time and join the private institute, this Chandigarh University. Strength और weakness क्या है आपकी? And my strengths are I am transparent, I am passionate towards my work, and I am a hardworking person. But my weakness is I am a straightforward kind of a person. Okay. I mean, you see, you are a fresher right now. So if some experienced person come, उन्होंने कहीं government sector में काम भी किया है, तो why should we choose you? आप में क्या है ऐसा, क्या potential है कि experienced person को neglect करना चाहिए? I am more energetic and I want to learn the new things. So I am adjustable to any kind of situation. What I am
I was able to input in that situation. I will deal with that situation more energetically and more enthusiastically rather than the experienced person. वो तो ट्रेन होके आएंगे, वो पहले ही उस टेकुरम से, दे माइट बी ट्रेन्ड एंड ऑल दैट, तो वी हैव टू इन्वेस्ट ऑन यू कि वो टाइम पीरियड भी ट्रेनिंग करने का भी. Yes, ma'am, but I have the ideas, different ideas in my mind to implement those ideas, fresh ideas as a fresher. गिव मी वन इनोवेटिव आइडिया इफ यू हैव सम Yes, ma'am. आइडियाज. Yes, ma'am. Ma'am, in our PWD department, Public Works department, the department needs the modernization in their work. Like we use the GPS technology in our department to move the machinery. Like in case of snow clearance, we use the machinery where we want to use that. We can locate the machinery with using the GPS technology, and we are able to use them effectively and efficiently by using this, Okay. and it will certainly reduce the cost. Aman, after the Article 370, what changes came in the administrative structure? Article after abrogation of Article 370, the state of Jammu and Kashmir was bifurcated into two union territories: Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. Union Territory of Jammu and Kashmir is with the Legislative Assembly and run by the Lieutenant Governor. Presently, he's Shri Manoj Sinha, and this administrative changes, all the work goes through this through the Lieutenant General Manoj Sinha, who works here. Okay. Can you just tell me the significance of Lal Chowk? Sorry, ma'am. Significance of Lal Chowk. Lal Chowk, ma'am. There is a Gantaghar in the Lal Chowk, which is of very significance of that area, Lal Chowk area. And what about Dal Lake? Is it, you can say, artificial or the natural one? Ma'am, as far as I know, ma'am, it is created by the tributaries, the nalas that are coming from different areas in the city of this Srinagar, and it is a natural. अमन, आपने अपनी हॉबीज क्या बताई थी? Ma'am, I like to watch and play cricket. What do you like in cricket? Ma'am, I like batting. You like batting? Why you like cricket? Ma'am, cricket shows the it shows us the courage to do the things in a more effective way. Sometimes there is a situation that we can say that we don't win from that situation, but if we have the courage to show the strength in that position, we can win from any kind of situation. अमन, रोल मॉडल कौन है आपका? विराट कोहली. विराट कोहली. Everyone likes Virat Kohli, है ना? Is it so? Ma'am, he has got self-determination. He has the courage to do anything in his own field. Okay, चलो मुझे 3 qualities अपने अंदर बता दो that I should be like कि he has ingrained 3 sum up words for your personality. Ma'am, I am very honest person. I am also very hardworking. I do the work with more effectiveness and efficiently what I am given the work. And other thing is that I am very trustworthy kind of person. How come trustworthy? I don't break the trust of others. Like in situation, if someone given me some kind of work and I don't want to break the trust, I do the work very effectively and efficiently and justify my trustworthiness. Okay, fine, right. ठीक है. See, Aman, I'll tell you some of the drawbacks which I felt in you. There are some good points also. ठीक है. First है, जब मैंने अभी last question क्या पूछा था? Tell me 3 words, 3 traits. 3 traits में सिर्फ उनको ना define नहीं करने को बोला था अभी. Listen to the question properly that it is all about your attentiveness कि आप question को ध्यान से सुनो. 3 अगर pointers दिए हैं तो और hard working, ये honest, ये हर बच्चा आएगा यही चीज बोलेगा.
ठीक है, हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर साइड, इट कैन बी मैम आई एम वेरी पैशनेट, आई एम डिटर्मिन्ड। आपकी जॉब की प्रोफाइल के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड हैव डेडिकेशन, राइट? यू शुड बी ट्रस्टवर्दी, दैट इज वन डोमेन। यू शुड बी लर्नर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं मैम सीखने को बहुत ज्यादा रेडी हूँ, मैं अडेप्टेबल हूँ, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। ये चीजें कहीं पे भी आपको रिक्वायर्ड होंगी। उस तरह के वर्ड्स अपने लिए चूज करो, ठीक है? हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, दे आर गुड वर्ड्स, आई डोंट से दे आर बैड वंस, बट चूज समथिंग डिफरेंट फॉर यू। उसके बाद आ जाता है एक, व्हाई टू चूज योर मैम, आई एम एनर्जेटिक, बट इन योर वॉइस एंड इन योर टोन आई डिडंट फील दैट यू वर एनर्जेटिक। है ना, बहुत स्लो से बोल रहे हो। थोड़ा सा अपनी, जब पॉजेस बोलते हैं ना हम, बोलने में मजा करो कि अपनी वॉइस को ऊपर नीचे करके बोलो। पिच को रेस करो, पिच को हाई करो। जब कोई नया पॉइंट लाते हो तो उसमें क्या करो, पिच को थोड़ा उठाओ। समटाइम्स द पीपल दे सी दे हैव लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स टू टेक इंटरव्यू, यू आर द वन जिन्होंने फर्स्ट टाइम देना है अपना इंटरव्यू, ठीक है? हाउ टू मेक इट डिफरेंट इज कि आप अपने पिच से उनकी, उनके ऊपर एक कहते हैं ना इंप्रेशन देना। यू हैव टू गिव देम द इंप्रेशन। इट इज अप टू यू कि आप अगर चुप करके ऐसे बोल के जाओगे, दे विल बी लाइक अ सिंपल कैंडिडेट। अदरवाइज इट कैन बी, आप थोड़ा सा उनसे इंप्रेशन वाइज raise your pitch, speak in a nice manner, smile at the start, smile at the end. These are some of the basic things that you need to adopt. ठीक है, यू डू स्माइल, बट स्माइल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि हाँ, अपने इंप्रेशन को, अपनी वॉइस को कॉन्फिडेंस लाओ। Okay. एनर्जेटिक बोलते टाइम लगे भी कि हाँ एनर्जेटिक है अमन, ठीक है? Okay. उसके बाद आपकी, व्हेन आई आस्क्ड यू लाइक व्हाई क्रिकेट, इट शुड नॉट बी लाइक कि मैम क्रिकेट पसंद है, इट शुड बी लाइक मैम इट टीचेस अस स्पोर्ट्समैनशिप। सम ऑफ द पॉइंटर्स शुड बी क्लियर। स्पोर्ट्समैनशिप आता है हमें, हार जीत के बारे में ये होता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कंपेनियनशिप, कोऑर्डिनेशन, व्हिच इज एक्चुअली नीडेड इन योर जॉब प्रोफाइल आल्सो। जॉब में क्या है, टीम, आप टीम में काम करते हो, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो ये चीजों को रिफ्लेक्ट करो कि एवरी स्पोर्ट टीचेस अस दीज थिंग्स एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू इनकलकेट दोज थिंग्स इन माय डोमेन आल्सो। क्लियर? एक अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? इंट्रोडक्शन में इट वाज वेरी, यू कैन से कंप्लीट। अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया, स्पेशल पॉइंट। अपने बारे में कौन सा स्पेशल पॉइंट बताया? कुछ भी नहीं। इट वाज जस्ट कि मेरी डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की, मैंने प्राइमरी, मैंने सेकेंडरी, मैंने यूजी, मैंने सीयू, सारे अपने एकेडमिक्स बता दिए एक डोमेन में। बट व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ अमन, व्हाट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ अमन? अमन के पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, पर अमन के अंदर कोई कैपेबिलिटी तो दिखे ना। फ्रेशर आया तो अपना वो खुद ही स्किल सेट दिखाओ। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम अमन, आई डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन द स्ट्रीम ऑफ दिस, बता दिया अपना एकेडमिक सारा। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं है तो इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, कोई चीज डिस्कस करो। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, मेरा फेवरेट टॉपिक क्या है, मैं किस पर डिस्कशन कर सकता हूँ, वो मुझे बताओ। मुझे लगे ना कि हाँ अमन के अंदर भी कैपेबिलिटीज है। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू 2-3 टाइम्स। मैं तो किसी एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप ना अपने बारे में पोटेंशियल कुछ बता रहे हो, फिर आपने को करिकुलर में भी ये बोल दिया कि मैं ना टेक फेस्ट में पार्ट लिया था। व्हाट डिड यू डू? को करिकुलर कौन से थे आपके? इनकम्प्लीट है वो भी। तो इंट्रोडक्शन दोबारा बनाओ, ठीक है? इंट्रोडक्शन, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, बी एनर्जेटिक, क्वेश्चन को सुनो, क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है, चूज गुड वर्ड्स फॉर यू। Okay. क्लियर? विल Okay. डू गुड, ट्राई टू improve in a better letter manner, Okay. right? Okay, all the best Aman, take care. Thank you. Okay, Aman, so what are your favorite technical subjects? So my favorite subjects are thermo, fluid mechanics, and heat transfer. Hmm. Okay, so can you tell me something about the trusses which you study in strength of material? Trusses. Yes. So we use this simply supported being, I think, Hmm. trusses, where the सपोर्टेड बीम में कौन से टाइप का रिएक्शन इंड्यूस होता है? yes sir. So we have horizontal reaction, vertical reaction, as well as the movement at the source. हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों इंड्यूस होगा? Why there will be horizontal reaction? If we have this if we have this eccentric load. अच्छा, बीम पे लोड कैसे लगाते हैं? वैसे बीम पे किस तरह का लोडिंग होता है? सब बीम पे ट्रांसवर्स शियर लोड भी अप्लाई। अच्छा, अभी जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें बीम नजर आ रहा है आपको? सर इसका क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं कॉपी पे?
ओके, हाइट ज्यादा है या विड्थ ज्यादा है? सर हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है। ऐसा क्यों? सर बिकॉज इट हैड टू बियर द शेयर लोड। ओके, So the height should be in transverse direction. Height should be more because it should bear uniformly distributed load. अच्छा, आपने सेक्शन मॉडुलस सुना होगा। Yes, sir. क्या होता है सेक्शन मॉडुलस? So section modulus it defines the if section modulus should be more for a cross section, then it should have more bending resistance. It should always be more for a material that we are And analyzing. what is the shape for which section modulus is maximum? So as far as I know, I section has more section modulus. Okay, but beams are not made up of 5 sections. घर में जो beam Yes, है वो तो rectangular section का है। yes, sir. In homes, I think rectangular cross section has more I section. उसमें हाइट ज्यादा विड्थ कम होती है। Yes, sir. It has height more. Let's say width is B and height is H. So what is Yes, the sir. section modulus of rectangular section? So it should be BD square by 6. अच्छा, और कौन सी शेप के बीम बना सकते हैं हम? So we can make the beam of square cross section. ओके, एंड कॉलम का सेक्शन क्या होता है? कॉलम का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? So generally we prefer column cross section to be of rectangular or circular cross section. आप न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, क्या है? Yes, sir. So centroidal axis is that axis which is the center of any cross section, whereas neutral axis is that axis where the longitudinal stress becomes 0. Okay, and if we want to calculate, neutral axis for some other shape, curved shape beam, how shall we do that? Neutral axis for curved shape beams. So we can do it by neutral axis. By taking the so sorry sir, I don't know. Okay, now tell me something about the bending equation. What are the assumptions behind the bending equations, Aman? Yes, sir. So bending equation we are used to find the bending stresses that are occurring on a cross section, and the assumptions that we use in bending equation are the material should be isotropic and homogeneous in nature, the beam should be prismatic in nature, and there should be proper bending in the beam, and the transverse section will remain same before and after bending. Okay, can you tell me what is the significance of point of contraflexure? Why do we calculate it? So significance of contraflexure is that at point of contraflexure the bending moment changes its sign, so we design the reinforced concrete beams according to by finding the contraflexure point of contraflexure. नहीं, अगर आपको पता लग गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, उसका क्या बेनिफिट होता है? व्हाई डू वी कैलकुलेट इट? Yes, sir, the bending moment there changes its sign, so we basically reinforced that by using a material that has tensile characteristics, because we use this concept in reinforced concrete beams where because concrete is weak in tension, so we provide the steel beams in that section so that it can bear the change, the tensile failure, it basically bears that. ओके, ये जो आपका बीम नजर आ रहा है ऊपर, इस बीम का
shear force bending moment डायग्राम प्लॉट कर सकते हो इस बीम के लिए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये बीम फेल होगा तो कहां से किस पॉइंट पे फेल होगा? So in this, the bending moment is at zero at the sports. So bending moment is zero at the sports. So I think at the sport. अच्छा, जिस रूम में अमन आप बैठे हो वो थर्मोडायनेमिक अगर सिस्टम ले लें तो उसको Yes, sir. डिफाइन कैसे करेंगे आप? हाउ शैल यू Yes, डिफाइन दैट? yes, sir. So if we take an example of this room, all the energy interactions that are taking place in that room, we considered it as a system. What are the energy interactions that are taking place inside this room? And what kind of energy interactions are taking place as of now? Is your room in a state of steady state, equilibrium state? Yes, sir. So because there is studies for steady state to follow, there is no energy, there is no energy accumulation, or there is no mass accumulation. Okay, so that way it is it's a equilibrium state. Yes, sir. Steady state. अच्छा, अब इस रूम में अगर मैं हीटर लगा दूं उसके लिए फर्स्ट लॉ कैसे लिखोगे? Yes, sir. I will try. So for this room, the heater, we give the heater work, so it basically increases the internal energy of that room, this room. It increase, but yes, but it will फर्स्ट लॉ में increase. तो दो और भी टर्म्स आती है ना? Yes, sir. Heat energy, work energy also. Sir, that work we consider if I am sitting in that room, in this room, and the heater is started, the work that is converted into heat, the heat I am taking that we take as a heat. But in case of that, this room, it increases the internal energy. अच्छा, आपका अमन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था? So my final year project was basically designing of this all-terrain vehicle and उसमें क्या fabrication किया of था? all-terrain vehicle. क्या Yes, डिजाइन sir. किया? What did you design in that? So we have designed the all-terrain vehicle, and we made the fabrication of all-terrain vehicle. I do the welding section of that all-terrain vehicle. Okay, and where did you do your internship? I have done my internship in this Jammu Motors Limited in my Jammu city. वहां पे क्या सीखा आपने? So there I learned about the engine section portion. What are the engine components? What are the parts of engine, and different type of suspension system I learned about this. Okay, Aman, let me give you the feedback of your this technical technical part now. अमन, थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा आपको. Okay, sir. जैसे आप सेक्शन मॉडल्स नहीं बता पा रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन में हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, सो दैट सेक्शन मॉडल्स इज मैक्सिमम. Yes, sir. सेक्शन मॉडल्स जितना ज्यादा होगा बीम उतनी ही स्ट्रांग होगी, रेजिस्ट टू बेंडिंग ज्यादा होगा, राइट? सो सेक्शन मॉडल्स का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा आपको गो थ्रू करना है. और बाकी भी जो आपके आंसर्स है ना, वो उस तरीके से स्ट्रेट आंसर नहीं आ रहे हैं. Okay, sir. जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए बोला, टेम्परेचर, प्रेशर,
and area. That is, I mean, size also is to be defined. तो फ्लोर Okay. एरिया कितना, हाइट कितनी, वॉल्यूम कितना है, वो सब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, यू नो, दैट इज अ सिस्टम, दैट इज हाउ यू डिफाइन द सिस्टम. Yes. तो वो आपका अभी मेरे को लगता है थोड़ा मैराथन्स को एक दो बार दोबारे देखो अमन. Okay, sir. और आपको प्रोजेक्ट का भी बहुत स्ट्रेट आंसर नहीं आपका आया, प्रोजेक्ट भी बहुत कंफर्टेबली आंसर नहीं कर पाए, इंटर्नशिप भी नहीं कर पाए आप. प्रोजेक्ट में क्या किया आपने, इंटर्नशिप में क्या किया आपने, ये स्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है और एक्सपेक्ट भी करता है 2-4 लाइन में आप सीधा आंसर करें उसको. Okay, sir. आपकी ओवरऑल मेरी फीडबैक ये है कि आप जो आंसर कर रहे हैं ना, उसको आप बहुत टाइम लगा रहे हैं और स्ट्रेट आंसर नहीं कर रहे हैं आप. आपका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं आप, फिर कुछ और डायरेक्शन में आप आंसर कर रहे हैं. तो अभी इसके लिए तो आप एक मैराथन्स को तो कंप्लीट कर लो. व्हेन इज योर इंटरव्यू? 24th. Yes. 24. हाँ, तो अभी उतना ही टाइम है आपके पास कि आप मैराथन रिवाइज कर लो 2-3 सब्जेक्ट के. Okay, sir. थर्मोडायनेमिक्स कर लो, हीट ट्रांसफर कर लो, फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लो. इनके मैराथन्स आप पहले भी सुन चुके हैं, 1.5 स्पीड या 2 स्पीड पे इन चारों को सुन लो Okay, sir. और अंदर जाके बोलो कि ये मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं. तो टेक्निकल क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे तुम्हारे. Yes, sir. राइट अमन, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. गो वेल Okay, ड्रेस्ड, sir. टाई एंड सूट एंड ऑल, गो Okay, वेल sir. ड्रेस्ड, राइट. Yes, sir. ठीक है अमन, ऑल द वेरी बेस्ट.